સુરતના સચિન જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલ શ્રીનાથનગરમાં 1.5 વર્ષની બાળા પર છત પડતા માથામાં ઈજા પહોંચતા સારવાર માટે હોસ્પિટલે ખસેડાઈ હતી। સુરતમાં ચોમાસા દરમિયાન અનેક દુર્ઘટનાઓ બની રહી છે, ત્યારે સચિન જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલ શ્રીનાથનગરમાં 1.5 વર્ષની બાળકી પર છત પડતા માથામાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી, જેથી બાળાને તાત્કાલિક સારવાર માટે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી હતી। બાળાને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ હોય, જેથી ડોક્ટરો દ્વારા બાળાની સર્જરી કરાઈ હતી। आपका नाम? मेरा नाम कुश कुमार। सूरत में कहाँ पे रहते हो? हम जीआईडीसी नाका के बाजू में टाउन शिफ्ट बालाजी के सामने श्रीनाथ नगर। सचिन 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 जीआईडीसी। क्या हुआ था बच्ची के बाद? बच्ची सो रही थी, सुबह 7:30 बजे छत गिर गया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस बुलाए, यहाँ लेके आए। क्या गिरा इनके पे? छत गिरा, छत गिरा। कितने बजे गिरा? 7:30 बजे। फिर ये बच्ची का नाम क्या है? तो नित्या। पूरा नाम बताओ। नित्या आदिवासी। कितने साल की? 1.5 साल की। 1.5 साल। आप क्या काम करते हैं? हम कंपनी में काम करते हैं। फिर आप इसमें किसमें कौन सा हॉस्पिटल लेके आए? ये कौन सा हॉस्पिटल? सिविल। सिविल में क्या बोला डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने बोले ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। ये तबीयत कैसी है बच्ची की? तबीयत अभी सही है, अभी यहाँ से अब आगे देखो क्या होता है।